Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinopal and I'm back with very exciting news for 2023 aspirants. The best crash course in physics for JEE Advanced in this country is now live and ready for enrollments. तो JEE Advanced 2023 के लिए जो crash course मैं लेकर आ रहा हूँ, the quality of content, the quality of teaching, I don't think मुझे उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है. If you watch any of my YouTube videos, you know the quality that I'm going to come up with. You know the quality and that I'm going to bring it to you. फिर भी if you have any doubts, just watch. If you're a new subscriber, just watch any of my videos. I suggest, मैंने link in the description डाला है. I suggest you watch one of the lectures in the crash course playlist. I would recommend electrostatics to get an idea कि what would be the quality of teaching and what would be the quality of content. जो मैंने 2022 के लिए crash course के जो 6 lecture बनाए थे वो मैंने playlist में डाले हुए हैं. That was screen recorded. And this 2023 के लिए it will all be whiteboard lectures, but the content will be similar. So you'll get an idea of the content that I'm going to provide. The main aim in this crash course is to revise all the concepts and revise the full syllabus in a short period of time. So to ensure that you do not miss out on any concept that may come in JEE Advanced. So this is like a foolproof way ऑफ एंश्योरिंग कि तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए. अगर तुमने तुम्हारे स्टडीज़ में कुछ मिस आउट कर लिया होगा तो वो कवर हो जाएगा. एंड सो आई हैड आस्क्ड फॉर इनपुट फ्रॉम यू गाइज सम टाइम अगो फॉर क्रैश कोर्स एंड मोस्ट ऑफ यू हैड टोल्ड मी कि यू वुड लाइक द होमवर्क प्रॉब्लम्स टू बी फ्रॉम द पाथफाइंडर बुक. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. पाथफाइंडर बुक से होमवर्क प्रॉब्लम्स रहेंगे विद फुल वीडियो सोल्यूशंस, ऑल द क्वेश्चन दैट आर रेलेवेंट टू JEE एडवांस, अराउंड 20 पर चैप्टर. वो मैं क्वेश्चन लिस्ट दे दूंगा and you will have to solve them. Then you can take a look at my solution. All video solutions will be available for each and every problem that I give you as homework. So schedule क्या रहेगा? We are going to start off the crash course from October 31st. ये भी मैंने तुम लोग को previous video में पूछा था some time ago, where you guys said कि most of you will end your syllabus in your coaching or wherever you're studying from by the end of October. So I decided that that will be the best time to ensure that everybody gets an opportunity to participate in this crash course. So October 31st will be the first lecture, and ये Monday है. So I have decided that I'm going to keep Monday, Wednesday, Friday. So lectures will be Monday, Wednesday, Friday. So what will happen is जैसे कि Monday को first lecture आएगा, and I'm going to start from mechanics and go in order. I'm going in order. I'm not going to start कि हाई वेटेज चैप्टर्स पहले करूंगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ. आई थॉट कि पहले वैसे करूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज व्हाट व्हेन आई गो इन ऑर्डर, आई गो इन द फ्लो. कि जैसे मैंने न्यूटन्स लॉज में कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँ, देन आई एम गोइंग टू यूज इट इन वर्क पर एनर्जी. वर्क पर एनर्जी जैसे सर्कुलर मोशन वर्क पर एनर्जी में मैं आई टीच यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन आई यूज इट इन अ लेटर चैप्टर. सो फॉर दैट मतलब इफ आई डू द लेटर चैप्टर्स फर्स्ट तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज I'm going to use concepts that I teach in the previous chapters that you may not have studied in your coaching. So I need to ensure that all of you are aware of those concepts that I use in the later chapters. ठीक है. So I'm going to go in order. बस एक चीज़ I need your input कि पहले काइनेमेटिक्स से शुरू करूँ कि पहले लॉज ऑफ मोशन से शुरू करूँ, वो तुम लोग मुझे बताओ, क्योंकि आई नो कभी कभार काइनेमेटिक्स से बोर हो जाते हैं. मैं खुद थोड़ा बोर हो गया हूँ काइनेमेटिक्स से, तो वो तुम्हारे ऊपर है. It doesn't matter to me honestly. But if you guys if you guys think कि laws of motion से शुरू करना चाहिए, तो we'll start off with laws of motion. That is not a big deal. But after laws of motion, we are going to go in order. Laws of motion, circular motion, work per energy, the center of mass rotation, and so on. तो एक एक concept जो build करेंगे वो सब use होते जाएगा. And lecture में I'm going to cover. My aim is to cover all the concepts and ensure कि you are मतलब for my peace of mind, I will know कि once you watch my lecture, you've covered all possible concepts that may come in your exam. एंड हर एक कॉन्सेप्ट के साथ वील ट्राई एंड डू अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लेक्चर इटसेल्फ, एंड देन फिर वो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए यू विल हैव टू यूज देम व्हेन आई गिव यू होमवर्क फ्रॉम द पाथफाइंडर बुक. तो जैसे कि मंडे को सपोज लेट्स से टेंटेटिवली मैं बोल रहा हूँ न्यूटन्स लॉज का लेक्चर है. लेक्चर का ड्यूरेशन क्या होगा? अराउंड 1.5 to 2 आवर्स का होगा, प्रॉब्ली मोस्टली 2 आवर्स का होगा, डिपेंडिंग ऑन थोड़ा चैप्टर, शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच चैप्टर. So 2 hours of screen recording is not actually 2 hours, because you know कि often I will ask you to pause the video, try the question that I've written on the board, try it out on your own. तो वो तुमको solve करना पड़ेगा. So 2 hours may maybe become 2.5 or even 3 hours for you when you watch the lecture. So you can always split it into parts. I myself I'm thinking कि वो lecture ही
instead of one file, I'll just split it natural breaking points पे, I'll just split it into 2 or 3 files. Total will be around 2 hours. तो it will help in one कि तुमको भी natural break point मिल जाएगा. It पूरा 2 hours का lecture which might stretch up to 2.5 3 hours for you. तो continuous देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो even for you, you will get natural break points when I just split the video lecture into 2 or 3 parts. ठीक है, वो that's not a big deal. तो जैसे मैंने न्यूटन्स लॉज का लेक्चर अपलोड किया, तो अक्टूबर 31st को यू विल वॉच दैट. देन यू विल ऑल्सो हैव पाथफाइंडर होमवर्क क्वेश्चंस एंड उसके साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी पूरा अवेलेबल रहेगा. सो यू हैव टू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑब्वियसली. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग ऑल्टरनेट डेज लेक्चर ओनली, बिकॉज पाथफाइंडर भी अगर इवन इफ आई गिव 20 क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा लगेगा. You could probably take more than 2 hours. Mostly you will take more than 2 hours. It's not about speed, because this is a learning process. You're getting exposure to very different type of questions. And Pathfinder book, if you don't know, is a recent book जहाँ से काफ़ी high level questions है, but जहाँ से very similar questions are coming in JEE Advanced. And ये तुम लोग ने मुझे वो जहाँ पे जब भी मैंने input मांगा था, तो तुम लोग ने मुझे बताया था कि you would love for me to give you Pathfinder homework so that you can solve it in an organized manner. And पूरा video solution भी तुम्हारे पास readily available रहेगा. ठीक है, पाथफाइंडर होमवर्क एंड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल रहेंगे. तो इट कुड, जैसे तुम्हारा बाकी का दिन का शेड्यूल है, केमिस्ट्री और मैथ्स भी तुम लोग पढ़ोगे, यू कुड वॉच द लेक्चर ऑन वन डे, देन सॉल्व द होमवर्क ऑन द नेक्स्ट डे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट अ गैप, बिकॉज इट कैन गेट अ लिटिल इंटेंसिव, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू पुट इन द हार्ड वर्क फॉर JEE एडवांस्ड. वो तो पता है अपने को. फिर वेडनेसडे को नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सर्कुलर एंड वर्क पर एनर्जी. सिमिलर प्रोसेस, पाथफाइंडर होमवर्क दिया जाएगा, सॉल्यूशंस ऐसे अपन करेंगे. एंड कोई भी अगर तुम्हारा इसमें से कुछ बैकलॉग रह गया तो यू हैव द वीकेंड टू कवर अप. ठीक है, तो ये अक्टूबर, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अक्टूबर 31st, नवंबर 2nd, नवंबर 4th, एंड वील प्रॉब्ली फिनिश अराउंड द 3rd और 4th वीक ऑफ दिसंबर. तो दिसंबर एंड तक तो पूरा खत्म हो जाएगा. दैट इज माई एम कि ये 2 महीने में यू शुड बी कंप्लीटली मास्टरिंग द all the topics from JEE Advanced, including the new syllabus. Don't worry, I haven't forgotten the new syllabus. New syllabus का भी पूरे topics cover करूँगा मैं, जो new syllabus 2023 के लिए added है वो भी. ठीक है, so if you have any doubts about what the content is going to be like, इसको मतलब कैसे cover करूँगा, just go and watch. जो जैसे मैंने link in the description डाला है, crash course के 5-6 lecture जो मैंने डाले हुए free to watch. They are screen recorded, but the content will be similar for our crash course also. तो उनका आइडिया आ जाएगा. आई सजेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लो, दैट्स अ गुड वे, बिकॉज तुम लोगों ने अभी रिसेंटली किया भी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सो यू विल गेट एन आइडिया. तो देख लो एंड यू विल सी कि काफ़ी सारे यू माइट एनकाउंटर सम कॉन्सेप्ट जो तुमने कभी पढ़ा नहीं है. सो दैट इज द एम हियर, टू कवर एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट. कुछ भी अगर तुमने तुम्हारे कोचिंग में मिस आउट कर दिया, तुम्हारे स्टडीज में मिस आउट कर दिया, दैट विल गेट कवर्ड इन द क्रैश कोर्स. दैट इज माई एम. ओके, सो ये सब तो ठीक है. थोड़ा और मैं वेबसाइट के बारे में बात करूंगा. But obviously the question on everybody's mind, I don't think the quality is an issue. The question on everybody's mind, I'm sure, is what is the cost of the crash course. So let me just write it down here. तो ये मेरा क्रैश कोर्स का, ओ तेरी मैंने एक्स्ट्रा 0 लगा दिया, सॉरी, तुम लोग मुझे घर आके मारोगे. हाँ, सॉरी गाइस. तो ये दिस इज द क्रैश कोर्स कॉस्ट, एंड फॉर टुडे आई एम reducing it to only this amount, only 30 to 100 rupees. You will not find a better crash course, a better quality crash course for JEE Advanced at a cheaper rate, and you know I'm telling the truth. जब मैं बोलता हूँ कि it's the best crash course in the country, everybody when they sell their product, सब लोग यही बोलते हैं, best seller book, best product, everything best. But when I say it's the best crash course in the country, I mean it, and you know it. So I've tried to keep it as affordable for everybody. So this is the cost for today. If you are a serious aspirant and you know you want to take the crash course, I suggest आज ही enroll कर लो. कल ये price नहीं रहेगा. ठीक है. This is the actual cost. This is the discounted price only for today. अब doubts वगैरह कैसे पूछेंगे? So I have run Gamechanger 2022 के लिए रन किया था, अभी 2023 and 2024 के लिए भी currently रन हो रहा है. And there is a very nice process for students to ask doubts in a very organized manner. तो वो जरा मैं स्क्रीन पे ही बता रहा हूँ, टेक अ लुक.
So just go to vinayopal.com and you can just have a look at मेरे बारे में थोड़ा सा मेरा academic qualifications, testimonials, etc. वो सब खुद देख लेना. तो and then go to Crash Course 2023 and click here more details पे. Or you can also directly access this course page from the link that I put in the description, the YouTube description. Alright, so सबसे पहले यहाँ पे do not click buy now. So click start a free trial so that you can access and watch the sample video clip. तो sample video clip is just so that you can check कि तुम्हारा device वगैरह सब properly चल रहा है, कोई issue नहीं है, ठीक है. So just click that and before अच्छा and also make sure that you read this FAQ section thoroughly, properly पढ़ लेना और start a free trial करके वो sample video clip देख लेना. It's just a 5-minute video, not really for content but more to make sure कि तुम्हारे device वगैरह में issue तो नहीं है, player में issue नहीं है. वैसे तो आई हैड रन द गेम चेंजर कोर्स फॉर 2022, 2023 और 2024 के लिए भी अभी करंटली रन चल रहा है एंड नो वन रियली हैज एन इशू विद द वीडियो प्लेयर, बट जस्ट टू बी सेफ जस्ट मेक श्योर कि एक बार तुम्हारा डिवाइस चेक कर लो. ओके, सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस, लेट मी जस्ट क्लिक स्टार्ट अ फ्री ट्रायल. तो यहाँ पे तुमको जस्ट रजिस्टर वगैरह करना होगा, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड जस्ट कम बैक टू द सैम्पल वीडियो क्लिप. ठीक है, सो वंस यू आर एबल टू व्यू दिस सैम्पल क्लिप, लेट मी जस्ट शो यू कि डाउट वगैरह कैसे पूछते हैं. सो लेट्स जस्ट लेट मी गो हियर. तो 3 मिनट 36 वीडियो पे मुझे यहाँ पर कुछ तो डाउट आ गया. ऑलराइट, तो लेट मी जस्ट टाइप इन. तो मैंने एक्चुअली एक एग्जांपल ऑलरेडी पहले से एक डाउट लिखा हुआ है. सो दिस इज फ्रॉम माय आईडी बट यू कैन सी अदर स्टूडेंट्स का डाउट्स एज वेल. तो यहाँ पे लेट से कुछ भी टाइप इन करता हूँ, ठीक है, मुझे मेरा डाउट है. सो यू कैन जस्ट पोस्ट दैट एंड मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प के साथ. तो 3:36 पे यू हैड अ डाउट, यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो एट दैट टाइम, पोस्ट इन अ डाउट एंड मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आई विल बी एबल टू रिप्लाई टू यू. यू कैन ऑल्सो टेक पर्सनल बुक मार्क्स. तो कहीं सपोज इस पॉइंट पे यू वांट टू स्टॉप द वीडियो, कम बैक टू इट, तो जस्ट ये बुक मार्क क्लिक करो तो तुम्हारा बुक मार्क आ जाएगा यहाँ पर. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द बुक मार्क्स that you would have done. This is my personal set of all the bookmarks. तो 4 मिनट 37 सेकंड्स पर अभी किया, पहले मैंने 3 मिनट 26 सेकंड्स पर किया था, 3 मिनट 22 सेकंड्स पर किया था, ठीक है, एंड सो ऑन. एंड यू कैन ऑल्सो टेक नोट्स. तो जैसे कि कोई भी पॉइंट, लेट मी जस्ट प्ले इट. तो कोई भी पॉइंट पे लेट्स से यहाँ पर 2 मिनट 22 सेकंड, 2 मिनट क्या है 27 सेकंड्स पर आई वांट टू टेक अ नोट फॉर माई सेल्फ. तो लेट मी जस्ट गो क्लिक ऑन बुकमार्क्स एंड एड अ नोट. So let's say very important concept to be revised later. So this is for your when you revise later on, so you can just look at all the list of bookmarks. So यहाँ पे मैं add note कर देता हूँ, ठीक है. तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर जैसे 2 मिनट 27 seconds पे. You can always click on the timestamp and go back to that point in the video where you added your note. So ये सब पूरा तुम्हारा personal list of bookmarks है and notes है. So this doubt discussion feature is actually very efficient and 2022 के लिए, 2023 के लिए और अभी 2024 के लिए भी people are using this feature to ask their doubts. So just make sure you keep the doubt relevant to the video. ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा के उसको स्पैम कर दिया. तो प्लीज डोंट डू दैट. जस्ट कीप द डाउट रेलेवेंट टू द वीडियो या फिर द होमवर्क सॉल्यूशंस जो भी है, एंड आई विल बी एबल टू आंसर योर डाउट very easily. It's a very smooth process and I've been able to clear every single doubt for every student in the Gamechanger 2022 course, 2023 course and currently 2024 course. And right hand side पे you can just see a list of all the chapters. जैसे कि अभी तो मैंने 3 chapters रखे हुए and so for example Newton's laws of motion, if I just click on that, ये तो फिलहाल October 31st को रिलीज होगा. So you'll be able to see the video here and it's just a list of all the topics on the right hand side. Alright, तो यही मुझे ये स्क्रीन में बताना था and just make sure you read the FAQ section thoroughly. ठीक है, and one more thing, if you are a new subscriber, मेरा आवाज़ ऐसा नहीं रहता है normally. It will be मेरा आवाज़ थोड़ा गला आज के लिए बैठ गया, so don't worry, मेरा आवाज़ permanently ऐसा नहीं है. You can watch any of my other videos. ठीक है, so time to take your physics to another level. I hope to see you guys on my crash course. That's it for today. I'll see you at the top. Good night.